with a disposable damp tissue or piece of cloth using detergent or any disinfectant solution. What not to do. Do not use extension cords, as these appliances draw a lot of power, which may be a fire hazard. Instead, plug the appliance into a wall power socket with proper earthing. Do not plug the appliance when it's in on mode. This may damage the equipment. Do not use oxygen more or less than the limit prescribed by the doctor. Do not leave the power on when the equipment is not in use to avoid overheating. The oxygen concentrator, when in use, should not be kept near the curtains due to risk of fire. Do not smoke while using or in proximity of an oxygen concentrator. Please note, measure the patient's SpO2 with an oximeter every 2 hours while administering oxygen from an oxygen concentrator. If SpO2 does not improve, hospitalization may be required, in which case contact a doctor. Problems and solutions related to oxygen concentrator. If the equipment is not working and the alarm is going off due to power failure, it could be because of no power from the main socket. To solve this, check that the main switch is on and the plug is properly plugged in the socket. If the fuse is blown or burnt out, then replace it with a fuse of correct voltage or current. Check if there is electricity in the socket with a line tester. Contact electrician for repair if necessary. Concentrator circuit breaker has been turned off. To solve this, press reset button if present. In case of fault in the wire, to solve this, check the cable on another device. Contact an electrician for repair if necessary. Absence of oxygen flow. This may happen if flow cannot be observed. If the bubbles are released steadily, then the gas is flowing. Pipe is not connected properly. In this case, check the pipe and secure it tightly to the outlet port. Blockage in the flow meter or humidifier bottle. In this case, you should replace the flow meter or the humidifier bottle or call a biomedical technician. Alarm is on, indicating overheating or low oxygen. This may be due to overheating of the equipment or obstruction of airflow. In this case, turn off the machine from the mains. Remove any obstruction caused by curtains, sheets, walls, etc. Clean all external filters. Give oxygen using the standby oxygen cylinder. Restart the device after 30 minutes. Electric shock. This can be caused due to a fault in the wire or improper earthing. Call an electrician. Maintenance of oxygen concentrator. Daily maintenance. Wipe off any dust or dirt with a damp cloth and then dry it. Fill the humidifier bottle between the minimum and maximum levels indicated with clean water. Check that all screws, connectors, pipes and other parts are properly secured. Check for the oxygen flow before medical use. Weekly maintenance. Wash and dry the external filter with warm water and soap. Replace if it is defective. Clean the humidifier bottle thoroughly with detergent or a disinfectant solution and then dry it. Replace main plugs, cables or sockets in case of faulty working. Run the machine for 2 minutes and check for alarms. Check if the flow rate control is working properly by looking for bubbles to check flow rate. Every 6 months or in case of any problem with the oxygen concentrator, contact the toll-free helpline number to get the equipment checked by a service engineer. For more information related to COVID-19, call the helpline number 1075. I hope the video was self-explanatory.
और चीजें ऑक्सीजन जो अलार्म बजेगा वो 20 मिनट के लिए जो हम ऑन करके रखते हैं उसके लिए अलार्म मशीन ऑन होते ही बीप देगा, ऑन भी सिर्फ ये कि बंद हो जाएगा। वो अपने आप सेल्फ बंद हो जाएगा। वो आपको इम्पोर्टेंट साइन है कि मशीन चल रहा मशीन है। ऑन होगा ना उस समय एक तो बीप का आवाज आएगा फिर तुरंत बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंटरप्टेड बीप आता जा रहा है दैट मींस इंटरनल कहीं पे कहीं पे प्रॉब्लम फॉल्ट है, आप कॉल करना। वीडियो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, राइट? बहुत इजी है, एक बार आपने कर लिया आपके मन से फियर हट जाएगा। जिनने नहीं किया, जिनने किया ऑलरेडी वो तो पहले, ठीक है? तो आई थिंक अभी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डेमोंस्ट्रेशन आपको आ जाइए जो हमारे लिए कौन था आपके साथ। अभी आपको देख लिया, आपने देख लिया, आपको डेमोंस्ट्रेशन देना है, ठीक है? ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर लो तुम लोग। एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके देखो। और ये संजीवनी के लिए थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाओ। हम देखते हैं जो एक डॉक्टर्स की फिर से ये बनाएंगे नया रोस्टर जिसमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ अभी भेजा गया है। हाँ अभी सबका जो नए जो ट्रेनिंग लिए ना उनका आईडी पासवर्ड के लिए स्टेट भेजा गया है, तो इस सप्ताह में आ जाना चाहिए, है ना? हाँ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा 15-16 के बाद ठीक हुआ था मार्च में, लेकिन फिर इधर कम हो गया, है ना? लगना है संजीवनी में ही सबसे पीछे है। पहले नहीं, अच्छे से कर लेंगे।